Good evening, friends. Study with the Pala Engineering and General Geology Parvin Singh book. तो हम मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ रहे हैं. अब उसकी कंपैरेटिव स्टडी होगी. जैसे उसकी कंपैरेटिव स्टडी में हम कुछ रॉक रख ली तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनका टेक्सचर, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन है, उनके कलर के हिसाब से, उनके ग्रेन की साइज़ क्या है, उसके हिसाब से उसकी कंपेयर करके उनका स्टडी करते हैं. ये तो कंपेरिजन बहुत सही रहती है. अगर आप सिंपली एक ले करके पढ़ रहे हैं तो आपको उतना नहीं दिमाग में बैठेगा जितना कंपेयर करके. कंपेयर में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन हाँ, कंपेयर करने वाली चीज़ फिर लॉन्ग टाइम तक, एक नहीं, आपको 2-3 की अगर कंपेयर कर रहे हैं तो वो भी याद रहेंगी. ठीक है. तो कंपैरेटिव स्टडी, a very convenient way to achieve a grasp of different rock of groups is to compare their properties. There must be some distinguishing feature between different rock. The student are advised to prepare table of comparative studies of different rocks which may be otherwise similar in broader appearance. We give below such a tables forms for 3 closely related metamorphic rock: slate, phyllite, and schist. Comparative study of rock textures: very fine grains less than 0.1 millimeter. Structure and phyllite, fine to medium grain size between 0.1 millimeter to 1.00 millimeter. Schist में जब देखते हैं टेक्सचर तो कोर्स grain size above 1 millimeter. Structure: slate, foliated, so perfect slaty cleavage with a smooth surface. Phyllite, foliated cleavage is rather so poor as the surface as are coarse and rough. And schist में structure है highly foliated, so the flaky minerals forms roughly parallel layers. Composition: slate में the individual minerals are not recognized by unaided eyes and identified under microscopes include phyllosilicate. And same is phyllite is the same as for slate, but mica becomes conspicuous. Schist, micaceous minerals. Dominant muscovite, chlorite, recite, and sterolite, garnet, and quartz. Rock also considered metamorphic. The following 3 rocks are generally classed as having doubtful origin. In many cases, they show typically metamorphic features without there being sufficient evidence as to cause of the development of those features and also about their parent rock. Migmatites. There are essentially mixed or hybrid types of rocks that consist of intimately associated members of igneous granitic rocks and metamorphic gneiss and schist group. 2 chief types of migmatites commonly recognized are borders zones migmatites. These occurs along the contact of massive igneous rocks and the country rocks. At these locations, migmatites form a sort of transition zone and that separate the country rocks from the congealed यानी cooled down magmatic intrusion. It has characters of both the igneous rocks and the country rock. Regional magmatites. These are of a widespread occurrence. A streaky or banded appearance is a typical structure of all the magmatites, and the band may be made of alternating igneous and metamorphic rock. As regard their origin, there is as yet no close agreement amongst the petrologists. The association of the granitic rocks banded or intermingled with the metamorphic rocks is explained in different ways, such as the granites being the original rock that has found from magma got injected in the country rocks which was metamorphosed in the process. The original country rock was of metamorphic types and granites were formed from it by a process of replacement or recrystallization, and the granitic magma has been produced locally by selective meltings and then getting crystallized again.
Hence, it is possible that one of these modes of origins may be applicable in a particular magmatic mass under study, eclogite. These metamorphic rocks are characterized by such distinct minerals assemblage consisting of phasites, greens, pyroxenes high in sodium and aluminum. Pyropes are brilliant reddish browns garnet. Besides these two essential eclogite minerals, the rock may also contain deposite deposite, instatite, kyanite and olivines, and occasionally diamond. And elongites has a high density, 3.3 to 4.2 gram per centimeter square. Eclogites are rare in occurrence. They occur intercalated and associated with other metamorphic and igneous rocks. Origin of eclogites is still an interesting problems for petrologists, and many radically different mode of origin have been suggested for them, such as these are considered igneous rock recrystallized from a different and distinct type of magmas under condition of high confining pressure. These may be types of metamorphic rocks that have been subjected to partial melting and decrystallizations under different situations. Charnocite. These are hypasthenes bearing granitic rocks that are garnetiferous. T.H. Holland, ये scientist है, first used the terms for hypasthene granites used as a tombstone of Job Charnock, and later it was extended to a series of genetically related rock occurring in Tamil Nadu, the Charnokites series. The series saw variations from acidic to ultramafic rock. The origin of Charnokite is also a debatable topic. The rocks shows granoplastic texture and quite a variable mineralogical composition. There is a broad consensus that Charnokites are actually igneous rocks rich in hypasthenes which have been placed in sheets of variable thickness in folded basement rock. Thank you. Chapter is completed. So आप लोग जैसे रॉक है कहाँ कौन सी पाई जा रही है उसको वर्ल्ड लेवल पे मैप में और इंडिया लेवल पे मैप में उसको इंडिकेट करिए, मैप का बहुत यूज़ करिए. आगे आपके कंपटीशन में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी. तो अगर आप अभी जब कर रहे हैं, अगर आप B.Sc कर रहे हैं, M.Sc कर रहे हैं या किसी भी उसमें फील्ड में हैं, अभी मतलब कंपटीशन में नहीं आए हैं, तो आप अभी अच्छे से डिटेल में पढ़िए और उसको मैपिंग के साथ करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स लाएंगे. आपको याद लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि बहुत जब कंपटीशन देते एग्ज़ाम अगर वन डे है तो आपको चाहे वो मिनरोलॉजी हो, चाहे इंजीनियरिंग जियोलॉजी हो, चाहे वो आपको पेट्रोलॉजी हो, आपको ये स्ट्रेटिग्राफी है, तो ये जब आप निकाल रहे होते तो माइंड में सब हैंग करने लगते हैं इकट्ठे. अगर आपने अच्छे से विद डायग्राम्स और हर चीज़ की डेफिनेशन तैयार करके रखी है और अच्छे से पढ़ रहे हैं खुल के, तो आपको फिर उस वक्त लास्ट टाइम पे माइंड हैंग नहीं करेगा, अच्छे से आंसर निकलेगा, वो भी सही समय पे. अगर टाइम एग्ज़ाम का हमें 2 घंटा मिला है, 3 घंटा मिला, अब आंसर उस वक्त नहीं आ रहा, उसके बाद आ रहा है आंसर याद, तो समझ लीजिए वो आपका टाइम जो गया वो आपको नहीं मिलेगा. इसलिए आंसर उसी वक्त जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उसी 2 घंटे में, 3 घंटे में माइंड से अच्छे से पुटअप हो रहा है, तो आपके लिए बेस्ट है. इसलिए कोशिश करिए कि जितना हो सके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम करिए अपने क्लास के, और प्रैक्टिकल वर्क करिए, डायग्राम ज़रूर बनाइए विद लेबलिंग, और एग्जाम्पल और डेफिनेशन हमेशा तैयार रखिए. थैंक यू. प्लीज़ गिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स.